This is All India Radio. Welcome to the business news program Money Matters. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, बिजनेस न्यूज मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। और आज हमारे साथ इन खबरों पर चर्चा के लिए शामिल हैं प्रोग्राम में शरद कोहली, जो हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ। शरद जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ राजेश लेख। Sensex plunges 3.5% in the week ended yesterday, in sync with losses in the global stocks. Sensex declines to 49,100. Nifty index finishes at 14,529. Rupee weakens 105 paise against the US dollar. And US equity indices extend losses yesterday amid rise in bond yields and inflation. वैश्विक बाजारों में गिरावट के अनुरूप कल समाप्त सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 3.5% लुढ़क गया। वैश्विक बाजारों में पिछले 9 महीनों की सबसे बड़ी अंतर दिवसीय प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई। अमेरिका में सरकारी बॉन्ड पर ब्याज यानी यील्ड में तीव्र वृद्धि के बाद निवेशकों ने शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और शेयर बाजारों में बॉन्ड बाजारों में मुनाफा वसूली की। विश्व भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने से भी निवेशकों की जोखिम उठाने की प्रवृत्ति कम हो गई। सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स कुल 3.52% की मंदी से 1,790 अंक कम होकर 49,100 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इसी दौरान 3.02% कम होकर 453 अंक टूटकर 14,529 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स के मुकाबले बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.28% की मामूली गिरावट में रहा। बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 1.47% की बढ़त दर्ज हुई। शरद जी, जो हमने चौतरफा गिरावट देखी है शेयर बाजारों में, बॉन्ड रेट्स में, कमोडिटी बाजार में भी मुनाफा वसूली की बात कही गई है, तो आपको लगता है कि क्या ये सारे एसेट क्लासेस के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है चौतरफा, या कुछ और इंडिकेशन दे रही है अभी की स्थिति? Sharad, I'll add to this what my colleague has asked you regarding the surge in benchmark bond yields which spooked the investors quite a bit yesterday. Are there fears, apart from what Sonu has said, about the foreign investors withdrawing money from India? And the central bank will also have to change the dovish stand to tame inflation, if any. Well, it's a combination of everything. अगर मैं सब चीजें जो सोनू ने और आपने बोली, if I try and combine everything together, yes, bond yields were the main culprit. But the bond yields in the US had almost touched 1.6 on the 10-year bonds, which was by US standards. I mean, not by Indian standards, but of course by US standards, that's quite high. And obviously that drives the FIIs to pull money out of the markets. This is one reason. And of course, the excessive liquidity which has been pumped ever since Corona broke out in March, I think at some point that liquidity has to be reduced because it was fueling inflation, and we saw inflation fears in US growing. Even in India, we saw inflation because of petrol, diesel, and many other reasons. The inflation rates have been climbing. So I think with the inflation climbing, the bond yields went up and vice versa. And we observed that, and I think the best way for investors to look at it, there is something called India VIX. We call it as the volatility index. In fact, in lighter way, we call it as the fear index. So we found that India VIX went up to almost 28, 29, whereas it was hovering around 20, 21 or 24 maximum over the last few weeks. But suddenly yesterday it shot up to 28, 29. So that indicates and the dollar index. So these are the two indexes which point out towards movement of stocks. Yes, pulling out of dollars, inflation fears, bond yields, imposition of taxes in the new Biden administration, by the new Biden administration, bringing in of the wealth tax. So it's a combination of all the factors which created a bit of panic amongst all asset classes. We saw gold falling down. We saw the cryptocurrency swinging up and down. So I think there was a bit of an utter confusion amongst investors as to where to go. And whenever there is confusion, the volatility rises. And we observe this kind of decline. क्या सोचते हैं कि स्टेबिलिटी कब तक लौटेगी बाजारों में?
देखिए, स्टेबिलिटी कब तक लौटेगी इस सवाल का बहुत सटीक जवाब देना तो शायद कठिन होगा, पर मैं आपको एक रिसर्च एनालिस्ट और एक अर्थशास्त्री होने के नाते ये बता सकता हूं कि जब तक अमेरिका, हम माने या ना माने, अमेरिका से ही जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, हमने देखा संकेत ज्यादातर वहीं से आते हैं। तो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नई आई है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, चंद हफ्ते हुए हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियां सेटल डाउन होंगी, हमें स्टेबिलिटी दिखनी शुरू होगी। दूसरा, स्टेबिलिटी जब आएगी जब हमें इस कोरोना वायरस का जो बार बार ये उछल के वापस आती है, म्यूटेड वेरिएंट सामने आ रहे हैं, इसके नए म्यूटेशन सामने आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जब तक पूरी तरह से पूरी दुनिया वैक्सीनेट या तो हो जाए और वो भी म्यूटेंट्स के लिए इफेक्टिव हो, या तो तब हो, या ये कोरोना वायरस धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी हो जाए, किसी तरह ये वायरस सेटल हो जाए, क्योंकि वायरस का बार उभर के आना मुझे लग रहा है निवेशकों को और पूरे व्यापार जगत को में बहुत उथल पुथल मचाता है, अनिश्चितता पैदा करता है और उनको आगे समझ नहीं आता कि किस तरफ डायरेक्शन ले। तो मुझे लग रहा है ये दो फैक्टर्स स्टेबिलिटी की तरफ सोनू कंट्रीब्यूट करेंगे। So going forward, as you mentioned yourself about the strategies of the US being unfolded in the coming week by Biden and of course the vaccination process and trying to overcome the fear of the pandemic. So, do you think the status of the volatility index, which you mentioned, will change in the coming week to positive or negative, and why? You see, the volatility index, it is called India VIX, VIX for the listeners of Money Matters. We must mention in case some people who haven't heard of this index. Now, this index, when we find that the volatility is high, the index rises. So, a lower index is good for the markets, is good for the financial market. A lower index indicates that the volatility is less. Yes, in the times to come, as the market stabilizes, as what Sonu asked just now, as the market stabilizes, you will find that the India VIX index will come down and will settle down. So markets, when they move in one direction, I think the investors don't get confused. But when the markets jump up and down, it confuses the investors and it tends to bring in more losses because both ways you stand to lose. So what's your view on the coming market? Look forward to a better future. So how do you see the market unfolding starting Monday? I think markets would remain volatile. We can see some kind of bounce back, maybe after this massive fall which took place on Friday closing. But then overall, I think the cautious approach would be there. I don't really see a major bull run happening in a very, very near future. Market will continue to remain volatile is my observation. Okay. Moving on, the rupee in the business week ended yesterday weakened 82 paise to settle at 73 rupees and 47 paise against the US dollar. The domestic unit fell during the week mainly due to the plunge in the domestic equity markets and modest appreciation in the American currency. Yesterday, the rupee tumbled 105 paise, while the dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, rose 0.88% to 90.93. And the Wall Street's main indices extended losses yesterday as fears of a potential rise in inflation kept US bond yields around one-year high. On the other hand, tech stocks clawed back some losses. The Dow Jones Industrial Average plunged 1.5% and the S&P 500 fell 0.5%. However, the Nasdaq Composite Index added 0.6%. शरद, ब्रीफली रुपए में जो गिरावट आई है, अभी तक हम रुपए में बहुत स्टेबिलिटी देख रहे थे, बाजार गिरता भी था. सो ब्रीफली 10 सेकंड में आप बता सकते हैं ये क्या चिंता का विषय है? जी हाँ, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाला जिसके कारण मार्केट गिरी. मुख्य कारण तो यही रहा, रुपए में बहुत बड़ी 105 बेसिस पॉइंट्स की बहुत बड़ी एक दिन की गिरावट मानी जाती है. तो मुख्य कारण यही था कि विदेशी निवेशकों ने कल पैसा भारतीय बाजारों से. शरद जी, हम इस पे और चर्चा करेंगे मार्केट मंत्र में 6:30 बजे. अभी इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा. मुख्य समाचार एक बार फिर. वैश्विक बाजारों में गिरावट के अनुरूप कल समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 3.5% लुढ़क गया. सेंसेक्स 49,100 पर और निफ्टी 14,529 पर हुए बंद. रुपया डॉलर के मुकाबले ₹1.05 की गिरावट में रहा और बॉन्ड पर ब्याज में वृद्धि और मुद्रास्फीति बढ़ने के डरों के बीच अमेरिका में शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला कल भी जारी रहा.